Hi friends, welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is Science 2, 9th Standard Science 2, chapter number 8, Useful and Harmful Microbes. It is a very nice chapter. In this chapter, हम लोग जानने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन से हमारे लिए यूजफुल यानी कि फ़ायदे वाले हैं और कौन से हमारे लिए हार्मफुल यानी कि नुकसानकारक है microorganisms, jeev jantu. So, we are going to study about useful microbes first and then harmful microbes. Before starting, please like and subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video, and also share the video with your friends. So, let's begin with our first topic. हम लोग पहले देखेंगे यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में. So let's useful microbes may, as mentioned in the chapter, what we have to learn is Lactobacillus, Rhizobium, yeast, etc. So these are the some microbes that we have to study in useful microbes. So let's go. Let's see first one. I've shown a image for you. Microbes can be beneficial to us. That's a question to you from me. Give the answer in comment box. So first is lactobacilli. So मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Do you know how curd is made? दही दही. How curd is made? Anyone of you knows? You would have asked your mother. So मुझे तुमसे ये पूछना था कि how curd is made? Curd is made using lactobacillus. So, what is lactobacillus? Lactobacillus is a microbe. Lactobacillus are anaerobic bacteria that is they can produce energy without the use of oxygen. They are minute and rectangular in shape. So, two types of microorganisms are there: aerobic and anaerobic. Aerobic are those who need oxygen for their living processes or biotic processes, and anaerobic are who do not need oxygen. So these are lactobacillus are anaerobic bacteria, that is they can produce energy without the use of oxygen. They are minute and rectangular in shape. Okay, so what happens, how the curd is made? When how in your home, घर में तो your mother would have taken little curd in a hand and mixed in the milk, so that milk becomes curd. But how the first curd was made, do you know? So I will tell you that these lactobacillus are put into the milk. They convert the lactobacilli convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This process is called fermentation. Okay, this is fermentation. So they convert, there is a sugar in the milk present in the milk. There is a sugar, its name is lactose. This lactobacillus convert it into lactic acid. It becomes an acid, and this process is called fermentation. So as a result, the pH of milk decreases. pH is the power or strong, yeah, thickness we can say as a thickness. So you will be learning pH in further chapters in science 1. So of milk decreases, causing coagulation. So this is coagulation of milk proteins. Coagulation of milk proteins means the milk proteins are separated from each other. They get separated from each other. Thus, milk proteins are separated from other constituents of milk. This is what happens when milk changes into yogurt. So, जब दूध दही बनता है, तब वो जो लैक्टोबैक्सिलस होता है वो शुगर को लैक्टिक एसिड में बनाता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. उसके बाद जिसके वजह से वो लैक्टिक एसिड में बनने के कारण मिल्क का पीएच यानी कि मिल्क की थिकनेस कम हो जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है, कॉजिंग कोएगुलेशन यानी कि सारे प्रोटीन्स जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिल्क के उससे अलग हो जाते हैं. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट. जो
मिल्क योगर्ट इसके वजह से, इस प्रोसेस की वजह से होता है. एंड द मेन रोल इन दिस प्रोसेस इज ऑफ लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया. Yogurt has a specific sour taste due to lactic acid. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. सो वो जो योगर्ट यानी कि दही जो बनता है उसके पास स्पेसिफिक टेस्ट, थोड़ा सा मिल्क से अलग टेस्ट होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है. और उनका जो पीएच लो हो जाता है क्योंकि लैक्टोस लैक्टिक एसिड बन जाता है. सो एज अ रिजल्ट द पीएच डिक्रीजेस. ड्यू टू दिस द हार्मफुल माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड इन द मिल्क. सो जो हार्मफुल माइक्रोब्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो इस तरह कर्ड बनता है और उसके बाद कर्ड को बेचा जाता है. So this was the process how first curd is made, and after that your mother would be using little curd, taking little curd and mixing it in the milk. So that way they do every day. So why you know that why the curd very suddenly mixes with the milk and becomes again a curd? So मतलब योगर्ट, तुम लोग देखा होगा कि तुम्हारी मॉम थोड़ा सा हाथ में दही लेकर दूध में मिक्स करती होगी एक कटोरी में. फिर वो दूध को थोड़े समय आफ्टर 5 hours or 6 hours it would have become a curd. So why it happens? Because lactobacilli grow very quickly and that mixes with it and makes this process happens and the curd has been made. So this was the Lactobacillus role in the formation of curd. Now let's see the uses of Lactobacillus. Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, Shrikhand, etc. can be obtained by fermentation of milk. So बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किया जा सकता है लैक्टोबैक्सिलस से क्योंकि वो फर्मेंटेशन करते हैं मिल्क का. Lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider. Cider is made from apple, cocoa, pickles of vegetables, मतलब आचार या pickles of are also made from lactobacilli fermentation. Lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort. So lactobacilli को हमारे जो स्टमक में पेन ऐसा कुछ या स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, उसे क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. And other useful microbes are also there for that. Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli. जो खाना domestic cattle like cows और buffaloes को दिया जाता है, that is also fermented with the help of lactobacilli. The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some types of bread. तो lactobacilli को bread बनाने में भी यूज़ होता है लेकिन थोड़े अलग टाइप्स के ब्रेड. मेनली ब्रेड में यीस्ट यूज़ होता है और वाइन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है लैक्टोबैक्सिलस को. See, I have given some images. Live moving bacteria in your coat. See that little spots are there or something that has grown up, risen up. That is lactobacillus fermentation is occurring. And I have given different rectangular shape of lactobacillus. It's very much specified like green color one. Now next useful microorganism is Rhizobium. So Rhizobium are pinkish and rod shaped bacteria. How are Rhizobium? They are pinkish, pink in color and rod shaped. For obtaining Rhizobium we have to search for the root nodules of leguminous plants. Leguminous plants मतलब pulses. You all know pulses like beans, sweet pea, soyabean, ये सब पल्सेस होते हैं. उनकी रूट्स में उन्हें लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं और उनकी रूट्स में राइजोबियम तुम्हें मिलेगा रूट नोड्यूल्स में. ऐसा क्यों? बिकॉज सिम्बायोसिस इज taking there. We will learn about symbiosis also. Let's see a picture of rhizobium. This is a picture of symbiosis also. But rhizome is also called a symbiont. What it is also called? It's called a symbiotic bacteria or a symbiont. See that in the root nodules there are little small circles that are the rhizobiums.
You can see it. The green colors. There it is marked. So that are rhizobiums. Now we will learn about symbiosis and the relationship between the leguminous plants and rhizobia. So rhizobia living in root nodules supply nitrates, nitrites and amino acids to that plant. What they supply? Nitrates and nitrites. Nitrates and nitrites and amino acid to that plant, and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it. So अभी ये एक डील है, तू भी दे मैं भी दे, ऐसा वाला डील है. राइजोबियम्स प्लांट्स को देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स को देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्रस और अमीनो एसिड्स देते हैं, और इन एक्सचेंज वापस में वो लेते हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट्स एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दैट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, मतलब उसको भी फायदा ते मेरे को भी फायदा. Both are having some benefits. So such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. Rhizobia produce nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soya bean, etc. as host. So उन लोग को ये प्रोसेस होने के लिए, this process to happen, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soya bean, except as host beans. उनको वो host beans की तरीके से चाहिए. So these are some examples: beans, sweet pea, soya bean. They want them as host. Beans and pulses are rich in proteins due to nitrogenous compounds made available by rhizobia. So ये सारे जो pulses होते हैं वो प्रोटीन्स में रिच क्यों होते हैं? क्योंकि उन rhizobia के वजह से. इसलिए लोग बोलते हैं ना ये बीन्स में ज़्यादा प्रोटीन होता है, you should have beans that way because of the symbiosis they have. See, this is a process of symbiosis in picture. You can observe it. Now we will be learning about antibiotics. What are antibiotics? So let's learn. एंटीबायोटिक्स के बारे में तुम लोगों ने सुना ही होगा. डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, डॉक्टर देते हैं एंटीबायोटिक्स. लेकिन तुम्हें को बात ही पता है व्हाट दिस एंटीबायोटिक्स डू इन योर बॉडी. क्या काम क्या करते हैं, तुम्हारी बीमारी को कैसे भगाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. सो लेट्स सी. कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. सो जो कार्बन कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम सम बैक्टीरिया और फंगाई से बनाया जाता है ताकि हम लोग डिस्ट्रॉय करें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ अपनी बॉडी में रोके, उसके उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. Antibiotics is a discovery of the 20th century have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated. Eradicated मतलब removed from some countries. सो एंटीबायोटिक्स के वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बहुत डेवलपमेंट हो गया था. और एक खतरनाक डिजीज लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इज, उसको भी बहुत देशों में से पूरी तरह से एरेडिकेट किया, मतलब रिमूव कर देना. जैसे कि इंडिया में से पोलियो निकल चुका है. अब इंडिया में पोलियो का कोई पहले बहुत केसेस आते थे, अभी कुछ नहीं आता बिकॉज दे हैव बीन एरेडिकेटेड. सो वैसे ही बहुत देशों में से ट्यूबरकुलोसिस को एरेडिकेट किया गया है, फिर भी अभी भी इंडिया में उसके बहुत सारे केसेस आते हैं. एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ. सो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन कुछ कर सकते हैं प्रोटोजोआ को भी ख़त्म. Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called broad spectrum antibiotics. Examples are ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. मतलब antibiotics के दो types होते हैं, broad spectrum एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, जब डॉक्टर को नहीं पता होता है कि आपको कौन सी डिजीज हुई है, the patient has which disease the doctor doesn't knows, so he gives broad spectrum antibiotics. Okay. और
Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, the narrow spectrum antibiotics are used. Examples are penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. So, जब भी डॉक्टर को पता है कि आपको यही डिजीज हुआ है, यू हैव बीन कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया और दिस पैथोजन, और तुम सिम्टम्स भी वही है और डिजीज भी वही है, दैट इज एग्जैक्टली नोन, तभी आपको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। वरना अगर नहीं पता होता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। सो जब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है तो उसका मतलब है कि आपको एग्जैक्टली डॉक्टर को पता है कि पेशेंट को ये डिजीज हुआ है। Okay, these were the two types of antibiotics. I'm ending this lecture here only. Please like and subscribe my channel, and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video. और मैं ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो हमारे चैनल में बने रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में अभी जल्दी ही अपलोड होगा।